dear students. I'm your English teacher, Miss Marine Yasser. This is your English class. So please take out your Broadway course book and open the page number 88. Unit number 8, A Helping Hand, page number 87 and page number 88. The date is 2nd December 20, class work, and the day is Wednesday. Today we will do the remaining part of unit number 8, A Helping Hand. Now we read the story. The donkey falls down, full stop. It cannot walk anymore. The man puts all the salt on the camel's back. Then he puts the donkey on the camel's back. They climb the hill. The camel thinks, I said I won't help the donkey. Now look at me. I'm carrying both the donkey and his salt. Now please take out your English CW copies, English classwork copies. First of all, write date, classwork, day on the top of the page. Draw a margin line on the left side of the page. In the first line, you give the heading of unit number 8. In the second line, you write A Helping Hand, name of your unit. In the third line, draw a star at the right side of margin line and write make sentences. Then write in the next line words, sentences. Don't forget to number the words 1, 2, 3 and then write the words hill, camel, week. Then draw a line and write here sentences. हिल हिल का क्या सेंटेंस हो सकता है स्टूडेंट्स? द हिल इज़ बिग. अब हम सेंटेंस बनाते हुए क्या ख्याल करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आए, द हिल इज़ बिग, और जब हमारा सेंटेंस एंड हो जाए तो एंड पर फुल स्टॉप आए. और हिल का क्या सेंटेंस हो सकता है? आई क्लाइम द हिल, दिस इज़ अ हिल. इसी तरह आपने कैमल और वीक के भी सेंटेंसेस बनाने हैं. दिस इज़ अ कैमल, दिस इज़ अ टॉल कैमल. और वीक का बना सकते हैं द डोंकी इज़ वीक, द गर्ल इज़ वीक, द बेबी इज़ वीक. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स.